Okay, we are live. Hello. Good evening. Welcome back to the Law Entrance YouTube channel and to another session of today's Hindu analysis. Today is 1st of October. It's the start of a brand new month, and we are now almost 2 months away from our Gantavya, which is the D-Day, which is the CLAT exam, which is 7th of December. 2 महीने और कुछ दिन बचे हैं अब. दिल की धड़कनें तेज होनी चाहिए, नहीं है तो आज से हो जानी चाहिए और सीरियसनेस बढ़ जानी चाहिए. बाकी 1 अक्टूबर है, आज नवरात्रि है, सो हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी दशहरा इन एडवांस टू ऑल ऑफ यू. जो चीजें आप सेलिब्रेट करते हो उन सबकी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां टू यू एंड योर फैमिली. चलो स्टार्ट करें आज का डिस्कशन. यस, आज मेंटी होगा. हर्ष, बिल्कुल होगा आज मेंटी. कल मैंने बोला था आज मेंटी होगा, तो आज मेंटी होगा. बोला है तो करना पड़ेगा. ठीक है, चलो लेट्स लुक एट टुडेज एजेंडा. कौन कौन आ चुका है क्लास में? लेट्स सी. Riva is here, Prajwal is here, Ashnoor is here, Saransh is here, Karthik is here, Siddhi is here, Sneha is here, Disha is here, Harsh is here, Priyanshi is here, Chandralekha is here. All right. Good evening, everyone, and welcome to the class. Start करें आज का discussion. Let's look at what's on today's agenda. आज थोड़ा जल्दी चलेंगे क्योंकि एक लंबा मेंटी क्विज है. 17-18 क्वेश्चंस का मेंटी क्विज है एंड काफी फन मेंटी क्विज है. लाइक मजा आएगा आपको आज वाला क्विज में. जिन लोगों की इच्छा रहती है कि सर ये तो बहुत इजी क्विज बना दिया है, सर ये तो सारे क्वेश्चंस मुझे आते थे, कुछ मजेदार लेके आओ, कुछ थोड़ा टफ लेके आओ, कुछ नया लेके आओ. तो आज थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल रेज किया है. बहुत ज्यादा नहीं किया है, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल रेज किया है. मीडियम डिफिकल्टी के क्वेश्चंस हैं एंड चलो रिवील कर देता हूँ. शुड आई रिवील राइट नाउ कि मेंटी क्विज टॉपिक पे है, या शुड आई रिवील दिस आफ्टर आवर डिस्कशन? आफ्टर आवर डिस्कशन रिवील करते हैं. थोड़ा सा सस्पेंस, थोड़ा सा माहौल बना रहे जरा. ठीक है, चलो आज का एजेंडा देख लेते हैं. द फर्स्ट three topics which we are going to discuss today in detail are the 3 editorials. In fact, one is regarding girl education, one is regarding care and labor of care and providing care. उनके जो है डायनामिक्स क्या है, उनके कॉम्पेंसेशन वगैरह, उनको क्या फैसिलिटीज मिल रही हैं, एक्सप्लॉयटेशन वगैरह क्या है, वो सारी चीजें हम बात करेंगे. देन विल टॉक अबाउट यूपीएससी का फॉर्मेशन, यूपीएससी की जर्नी क्यों बात करेंगे हम, उस पर भी आते हैं. ठीक है, ये है आज के 3 एडिटोरियल्स विच विल डिस्कस. इसके अलावा 3-4 छोटे मोटे क्यूटी पटूटी से टॉपिक्स हैं जो हम न्यूज़पेपर पे डिस्कस कर लेंगे लगे हाथ चलते चलते. और फिर हम करेंगे आज का अपना वोकैब के 3 न्यू वर्ड्स एंड देन विल कम बैक टू द सरप्राइज मेंटी क्विज ऑफ द डे, जिसका है आप लोगों को काफी समय से इंतजार. सो वो घड़ी आ चुकी है. स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन व्हाइल वी गो टू द न्यूज़पेपर. आप लोग मुझे बताओ कि कल आप लोगों ने जो मुझसे ज्ञान लिया है 15 मिनट लास्ट में क्लास के, उसको आपने इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया कि नहीं? डिड यू गाइज do analysis of your preparation? Did you guys make a roadmap of what do you want to do in the next 60 days? या फिर कल मेरा जो प्रवचन था 20-25 मिनट का वो व्यर्थ चला गया, बेकार चला गया? How many of you did that introspection exercise? At least tried to do some introspection on how to plan the next 2 months, 60 odd days. Give me a quick yes in the chat box. Okay, good. GK time तो लेती है. I'll agree on that, Riva. No doubt about that. That GK would take time, 100%. Disha is saying motivation was really good. अरे यही तो है alternate career मेरा, motivational speaker बनना मुझे. But ठीक है, jokes apart, I'm glad that you guys found anything helpful in yesterday's discussion. जिन्होंने कल का एनालिसिस सेशन अटेंड नहीं किया, आप लोग कर सकते हो उसको अटेंड 2x पे. बट लास्ट के जो 20-25 मिनट है उनको जरूर अटेंड कर लेना, इवन इफ यू स्किप द एनालिसिस, बिकॉज we have basically discussed a very rudimentary framework and strategy on how to plan your next 60 days, how to go about your revision, how to go about your consolidation journey in the next few days. तो वो डेफिनेटली देख लेना. लास्ट के 15 ऑड मिनट्स, आई सपोज 15 से 20 ऑड मिनट्स आपको पता चल जाएगा, जहाँ पे मैं बोलूंगा कि दैट्स ऑल फॉर टुडेज एनालिसिस. उसके बाद से जो है बाबा गोविंद का प्रवचन है वहाँ पे, जो आप सुन सकते हैं और उसको अपने जीवन में उतार सकते हैं. और अगर आपके जीवन में उससे कोई सुधार आता है तो आप लोग क्या ही करोगे? वैसे मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते आप लोग.
दुआएं ही दे सकते हो, मुझे दुआएं ही दे देना, ठीक है। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ज्ञान काफी है। आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, आज लंबा डिस्कशन है काफी। लेट्स गो टू द न्यूज़पेपर। हाँ, ओके, दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर फॉर द डे। You see two articles. First is regarding an accident in a power plant. So this has happened in Chennai in a place called Ennore, where there is a special economic zone जहाँ पे एक ये स्ट्रक्चर जो है स्कैफोल्डिंग जिसको कहते हैं, ये गिर गया, क्रैश हो गया, इससे 9 लोगों की मौत हो गई। 9 people got killed in this power plant. This was a thermal power plant. 1320 megawatt इसकी कैपेसिटी है। एंड या दिस इज जस्ट एन इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, इसमें कुछ एनालिसिस करने का तो एज सच नहीं है। दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। ऑन द राइट हैंड साइड यू सी एन आर्टिकल रिगार्डिंग बिहार्स SIR एक्सरसाइज, जिसकी डिस्कशन हम काफी टाइम से कर रहे हैं। सो ये फाइनली जो है कंप्लीट हो गया है, ये रिवीजन एक्सरसाइज, एंड दिस वाज the first such major revision exercise in the last 22 years, and finally this has been completed. The final voter list has been released, the updated electoral rolls have been published by the election commission, and जो उनकी maths है उसके according there are now currently nearly 7.42 crores voters in the final electoral roll. 74.2 million कह लो या 7.42 करोड़ कह लो, एक ही बात है। रिवीजन से पहले 24 जून को 7.89 करोड़ वोटर्स थे। 1 अगस्त को जो ड्राफ्ट लिस्ट आई उसमें 7.24 करोड़ थे, और अब जो है फाइनल लिस्ट जो आई है उसमें 21 लाख लगभग नाम ऐड हो गए हैं। पहले 65 लाख डिलीट हुए थे, एंड अब जो है द फाइनल नंबर स्टैंड एट 7.42 करोड़। एंड हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, जिनका नाम आपको पता ही है, ज्ञानेश कुमार जी, उन्होंने सबका शुक्रिया अदा किया है, वोटर्स का, ऑफिशियल्स का, बूथ एजेंट्स का, पॉलिटिकल लीडर्स का, भगवान का, सबका। ठीक है, तो अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं और आप एक एलिजिबल वोटर हैं, तो आप जो है एक पर्टिकुलर वेबसाइट उन्होंने दी है voters.eci.gov.in, उस पर आप जाके चेक कर सकते हैं अपनी डिटेल्स और उनको वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज व्हाट दिस आर्टिकल इज अबाउट। ऑलराइट, आगे चलते हैं। एड्स आ गए हैं, उसके बाद सिटी बेस्ड न्यूज वी कैन स्किप, कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। State-based news, Vijay is saying that target me, not the TVK cadre. So this is regarding that stampede which happened, जिसमें 40 odd people lost their lives in this political rally. तो वही है, he's saying that his heart is heavy with pain. He states that he had campaigned in 5 districts without incident. He wonders why it occurred in Karur. Said that truth will come out soon. अब उसी से related जो है, NDA is now demanding impartial judicial investigation. ठीक है, we've discussed this. JP Nadda silence over death threat to Rahul Gandhi a matter of national concern. अरे बाप रे, कौन? Did you guys also hear that duk 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 sound of the bullet, the Royal Enfield? I don't hate that sound. I also own a Royal Enfield, but इतनी loud नहीं है मेरी बाइक कि लोगों के घरों में डुक 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 डुक। देखो, जस्ट छोड़ो, क्या बोलूं मैं, गाली देना भी अच्छी बात नहीं है स्ट्रीम पे। ठीक है, कमिंग बैक, तो ये तो चलो पॉलिटिक्स ही चल रही है। जेपी नड्डा साइलेंस एंड ऑल। केरला बीजेपी लीडर हु इशूड थ्रेट टू राहुल ड्यूरिंग लाइव टीवी डिबेट सरेंडर्स, गेट्स बेल। क्लासिक इंडियन पॉलिटिक्स। ओके, अनडिवाइडेड बंगाल इमर्जेस एज पॉपुलर दुर्गा पूजा थीम इन कोलकाता, अच्छी बात है। 16 more arrested in my hometown is again on the news. Bareilly outfits call for cleric's release. Who's the cleric in question? Maulana Mohsin Raza is the cleric, and another guy is Maulana Taqir Raza. These guys have been arrested for sort of provoking people and disrupting peace. अब देखते हैं क्या होता है। फिलहाल इंटरनेट आ गया है, मैं तो उससे खुश हूँ। बाकी ये लोग अपना निपटते रहें, जो भी करना है। इंटरनेट नहीं बंद होना चाहिए दोबारा, मेरा बहुत मुश्किल हो जाती है, बिना इंटरनेट के क्लास भी नहीं हो पाती है हमारी, एंड इट्स रियली हार्ड टू स्पेंड द डे विदाउट इंटरनेट। Anyway, Durga Puja reflects spirit of unity, cultural vibrancy, says our Prime Minister. He attended some festivities in CR Park. CR Park is a area in Delhi which is dominated primarily by Bengalis.
एंड वहाँ पे अलग अलग ऐसे पंडाल्स होते हैं दुर्गा पूजा के टाइम पे, वेरी ब्यूटिफुल सिनेरियो देयर। अगर कभी आप हो दिल्ली में ड्यूरिंग दुर्गा पूजा तो डेफिनेटली यू शुड विजिट, very attractive, very enchanting. मान मीट्स शाह, seeks special central package for his state. So यहाँ पे बात हो रही है भगवंत मान की, the chief minister of Punjab, and as you all know that पंजाब में, not just पंजाब में, उत्तराखंड में, हिमाचल में, नॉर्थ ईस्ट में, महाराष्ट्र में, सब जगह बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है फ्लड से। यहाँ पे ये आर्टिकल में पंजाब के सीएम जो है सेंटर से कह रहे हैं कि स्पेशल पैकेज, स्पेशली विलेजेस विच आर क्लोज टू द बॉर्डर, वहाँ पे डैमेज थोड़ा ज़्यादा है। गुरदासपुर, फिरोजपुर, those districts which are in the northwest part of Punjab. So yeah, let's see. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कह रही है कि पंजाब के पास सफिशिएंट फंड्स हैं, पंजाब कह रहे हैं हमारे पास सफिशिएंट फंड्स नहीं हैं। ठीक है। आम आदमी पार्टी ब्लेम्स बीजेपी फॉर क्राइम सर्ज इन दिल्ली। अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार है दिल्ली में, 4 इंजन की सरकार है। Okay, rain brings respite from heat, leads to traffic snarls. It's again New Delhi. All right, state-based news. Karnataka CM announces aid for flood-hit farmers. So yeah, Karnataka में भी flood damage काफी ज़्यादा है, and you can see the Chief Minister Siddharamaiah taking a aerial survey, plane में बैठ के उन्होंने देखा कि अरे सब कुछ डूब गया, चलो पैसे दे देते हैं। So they have announced compensation and all. सुरेश गोपी sparks row with remark on election malpractice. कौन है सुरेश गोपी? ये हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के। और क्या है यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट, इन्होंने कुछ कंट्रोवर्शियल रिमार्क दे दिया एक पॉलिटिकल मीटिंग में केरला में, जहाँ पे the remarks became a little problematic. He basically said that some politicians are being elected by corpses, by dead people, and said that a lot of these politicians have been thriving on votes of dead people dead for 25 years. And he said that there has been a lot of frauds in the election process, but उन्होंने कोई प्रूफ वगैरह नहीं दिया अपनी बात का। तो वही है कि उसी वजह से कंट्रोवर्सी वगैरह, रीजनल कंट्रोवर्सी, नथिंग वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी और समथिंग न्यू, चलते रहता है ये सब इंडियन पॉलिटिक्स में। RSS Gensec praises unwavering support for Sangh. So RSS is Rashtriya Swayamsevak Sangh, which is the organization which आप कह सकते हो एक तरीके से ideological organization for a few political parties, for NDA as well, BJP as well. तो इनके जो है 100 साल कंप्लीट हो जाएंगे कल। Tomorrow is their century. एंड कल एक और चीज़ भी है, कल गांधी जयंती भी है, कल शास्त्री जयंती भी है, और कल जो है कल एक और चीज़ हुई थी, कोई मुझे बता सकता है 2 अक्टूबर को और क्या हुआ था? अपार्ट फ्रॉम गांधी जी बीइंग बॉर्न, अपार्ट फ्रॉम शास्त्री जी बीइंग बॉर्न, अपार्ट फ्रॉम RSS completing 100 years, what else happened on 2nd of October? Let's see who knows. Anyone? No one? Yes. See, स्नेहा got it first. विजय और उसकी फैमिली सत्संग में गए थे, वहां उन्होंने पाव भाजी खाई थी। Yes, that's what I was looking for. शास्त्री जी का बर्थडे तो बोला मैंने। Yes, correct. OG people who know this reference are my friends without introduction. Okay, but ठीक है, jokes apart, आगे चलते हैं। फ्लड वार्निंग्स, बाय द वे दिस इज अ बॉलीवुड मूवी रेफरेंस, अगर कोई कंफ्यूज हो रहा है कि सर क्या बात कर रहे हो आप, तो एक मूवी है दृश्यम करके, उसमें अजय देवगन के कैरेक्टर का नाम विजय है, और वो लोग जो है इट्स लाइक अ मर्डर मिस्ट्री ऑफ सॉर्ट्स। मर्डर मिस्ट्री भी नहीं बोलेंगे, थ्रिलर है एक तरीके से। तो अगर आपने नहीं देखी है, इट्स अ गुड मूवी। इट्स बेस्ड ऑफ अ साउथ इंडियन मूवी, तो ओरिजिनल नहीं है बॉलीवुड का प्लॉट, कुछ भी ओरिजिनल अच्छा नहीं बनाता है बॉलीवुड, कुछ फ्यू सिलेक्टेड मूवीज को छोड़ के, बट हाँ इट्स अ गुड मूवी, no doubt. ठीक है। Ahead of polls in Kerala, UDF eyes NSS support. This is all politics. No option in app to record data of families refusing to join Karnataka social and educational survey. So we all know कर्नाटका में ये सर्वे चल रहा है, एंड ये जो है इसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, टेक्निकल चैलेंजेस भी आ रहे हैं, प्रैक्टिकल चैलेंजेस भी आ रहे हैं। इन्होंने एक ऐप बनाया है सर्वे करने के लिए, एंड उस ऐप में जो है ऑप्शन नहीं है टू मार्क हाउस होल्ड्स दैट रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट। तो
पेंडिंग के कैटेगरी में ही आ रहे हैं वो अभी भी, इवन दो वहाँ पे सर्वे हो चुका है, लेकिन वो लोग पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहे। दैट इज वन फ्लॉ इन द ऐप। उसके अलावा ये जो सर्वेयर्स हैं, जो एनुमरेटर्स हैं, दे आर कलेक्टिंग रिटन अंडरटेकिंग्स फ्रॉम दीज फैमिलीज हु आर रिफ्यूजिंग टू पार्टिसिपेट, साइटिंग लैक ऑफ टाइम या फिर वट एवर रीजन्स। दूसरी कुछ प्रॉब्लम्स वो ये है कि काफ़ी सारे जो शेड्स हैं, मतलब टेम्पररी शेड्स हैं, अनऑक्यूपाइड हाउसेज हैं, शॉप्स हैं, वो भी सर्वे में लिस्टेड हैं, बट वहाँ पे कोई रहता नहीं है। सो दे आर नॉट नॉन रेसिडेंशियल प्लेसेज एसेंशियली, बट दे आर स्टिल ऑन द लिस्ट एज हाउसेज, and they are appearing in the app due to electricity meter registration data and UHI IDs, health IDs. तो दैट इज अनदर इशू। फिर इंटरनेट कनेक्टिविटी इज वन इशू, कि जहाँ पे नेटवर्क अच्छा नहीं है वहाँ पे वो ऐप चल नहीं पा रहा, तो वो जो है इनोमरेशन सर्वेइंग अच्छे से हो नहीं पा रही है। फिर अपार्टमेंट्स में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, जैसे बड़ा लार्ज अपार्टमेंट बिल्डिंग है, उसमें काफ़ी सारे जो है फैमिलीज रह रहे हैं, इतने सारे हेल्थ स्टिकर्स हैं लेकिन फैमिलीज इतनी हैं, और जो है आपका ऐप जो है कुछ और नंबर शो कर रहा है, तो दैट इज ऑल्सो क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स। बेसिकली टेक्निकल और लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स काफ़ी सारी आ रही हैं। दैट इज व्हाट दिस आर्टिकल सेज। ओके, आगे चलते हैं। लेट्स मूव टू द एडिटोरियल सेक्शन। 100-year जर्नी एज द गार्जियन ऑफ मेरिटोक्रेसी, दिस टॉक्स अबाउट यूपीएससी, जिसकी आज सेंचुरी पूरी हो गई है। 1st of October marks a century of the establishment of UPSC. That is why we are discussing it today. This was Government of India Act 1999, which provided for this body, and in October 1926 Public Service Commission was set up on the recommendation of the Lee Commission in 1924. करेंगे इसकी थोड़ी सी बात when we come back to the PPT. On the left hand side you see an article saying labor of care, women who facilitate rural health care should get better wages. तो चाहे आप आशा वर्कर्स की बात करो, चाहे आप women who work as ASPs की बात करो, ASP यहाँ पे मतलब है अंशकालीन स्त्री परिचार्स, which are women in Maharashtra who perform this healthcare work in the rural healthcare setup. तो उनकी जो वेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा कम हैं, एंड बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। ये भी हम पीपीटी पे डिस्कस करेंगे, ये वाला आर्टिकल भी। देन रिक्लेम द डिस्ट्रिक्ट एज डेमोक्रेटिक कॉमन्स, ये आर्टिकल इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बट चलो ठीक है, देख लेते हैं हम इसमें क्या है। इसमें बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट India having a large young population, demography की बात हो रही है, and while the rest of the world is aging, लेकिन there's a lot of polarization, central governance is one thing and unequal development of the country is another thing. अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो गवर्नेंस है वो उतना यूनिफॉर्म नहीं है, यानी कि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं ज़्यादा डेवलप्ड हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स बहुत कम डेवलप्ड हैं। अर्बन एरियाज जो हैं they are contributing 60% of the GDP. Rural areas जो हैं अभी भी काफ़ी ज़्यादा अंडर डेवलप्ड है। तो you'll see a stark contrast in different districts अगर आप rural districts और urban districts को compare करोगे, and that is what they talk about governance on a district level as vis-a-vis governance on a centralized level, and the unequal development, the polarization between urban and rural, and उसकी वजह से a lot of young population, which is rural population, is left out of this economic development of the country. And youth being India's biggest asset, this is a problem for us. Therefore, we are getting imbalanced results and underutilized talent, weak purchasing power, and हमारी long term growth जो है इससे काफ़ी ज़्यादा hamper होगी. So basically, the author is arguing that the government is way too centralized. There's a lot of power in the hands of the center and very less power in the hands of districts as well as आपके जो पंचायत and municipalities हैं. So we operate in a more of a top down pyramid structure, जहाँ पे central government scheme बनाती है और फिर वो नीचे नीचे धीरे धीरे trickle down करके उसके benefits आते हैं, लेकिन बीच में इतने सारे barriers और agents और layers आ जाती हैं कि वो benefits अच्छे से पहुंच नहीं पाते हैं वहाँ तक। And हमारा जो political focus है वो that has also shifted from creating opportunities, creating jobs to कैश ट्रांसफर स्कीम्स की 3,000 रुपये जो है कॉलेज स्टूडेंट्स को दे दो, 5,000 रुपये जो है नॉन वर्किंग वुमेन को दे दो, 2,000 रुपये फार्मर्स को दे दो। सो हम कैश इंसेंटिव्स बांटे जा रहे हैं, विच इज़ नॉट सस्टेनेबल। उससे आप कुछ लॉन्ग टर्म में भला नहीं कर रहे हैं किसी का। दिस इज नॉट सस्टेनेबल, दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, दिस इज जस्ट
पैच वर्क एक तरीके से आप कह सकते हो कि भाई आपको जो है जहाँ पे स्टिच करना चाहिए वहाँ पे आपने सिर्फ पट्टी लगा के छोड़ दिया, बैंडेड लगा के छोड़ दिया. सो जो है काफ़ी पुरानी कहावत कि इफ़ यू give a man food, he'll eat for one day, but if you teach him how to fish or teach him how to grow his food, he'll probably sustain longer. तो वही वाला लॉजिक है यहाँ पे भी, that this ignorance of district level administration, district level development, especially rural development, is increasing the frustration of the youth, which is coming from a rural backdrop, and they are missing out on real opportunities. तो हमें district को as a democratic space और ज़्यादा develop करने की ज़रूरत है, and we need to break down these central schemes into locally trackable goals where different MPs take responsibility of their constituencies and how to link those constituencies to central government schemes and make local accountability more visible, more measurable, more trackable. And that can only happen with local collaboration from politicians, from corporates, from intellectuals, from policymakers, and of course from the public. सबका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट उसमें लगेगा, जो कि हमारे देश में मुझे नहीं लगता अभी लोग करने को तैयार हैं. But हाँ, one can be optimistic. I am also very optimistic. I try to be. And यही है कि ये this article basically pushes forward a district first framework for creating actual real local impact. ठीक है? So that's what this article is about. On the left hand side, you see an article saying swim to safety. Engagement with fishers can help with marine conservation. तो यहाँ पे चाहे आप फिशरमैन अलोंग द अरेबियन कोस्ट की बात करो, चाहे आप फिशरमैन अलोंग द श्रीलंकन कोस्ट की बात करो, या फिर आप फिशरमैन अक्रॉस द अंडमान कोस्ट की बात करो, देयर आर प्रॉब्लम्स इन आवर फिशिंग इकोसिस्टम, जहाँ पे specifically they talk about the dugong population. Dugong population as in dugong is a species, sea cows, which are slow breeders, and इनकी पॉपुलेशन जो है काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हो रही है recently due to poaching and due to pollution. And these were found in large numbers in Gulf of Mannar, which is on the southern coast, Park Bay, which is the water body between India and Sri Lanka, Gulf of Kutch, which is इंडिया पाकिस्तान का जो इधर वेस्टर्न बॉर्डर है, एंड द अंडमान निकोबार आइलैंड्स. सो दिस आर्टिकल प्राइमरली टॉक्स अबाउट दिस डुगोंग कंजर्वेशन एंड फिशिंग as well as poaching, as well as pollution as a problem. And it talks about how this Dugong Conservation Reserve was formed in 2022 in Park Bay, which is in Tamil Nadu, जहाँ पे आपका रामेश्वरम वाला region है. And this was brought under the Wildlife Protection Act. And this protects 12,000 plus hectares of seagrass meadows, which are important for the survival of dugong. And now this has become a model for marine conservation due to government efforts, scientific expertise, and support from the local community, especially the fishers. So वही है कि the signs are encouraging. Surveys are showing that धीरे-धीरे population is rising, and there is a positive step up from the fear of extinction जो एक टाइम पे था. And IUCN ने इसको recognize किया as a global model, and they have appreciated this model. IUCN is the International Union for Conservation of Nature, जो designate करता है कि ये animal endangered है, ये hyper endangered है, या फिर ये अभी red list में है, etc etc. तो वही है कि अभी भी काफी सारे challenges हैं, जैसे mechanized fishing, port construction, pollution, and still dugongs are dying in fishing nets, but we are still making some progress here. So that is what this article talks about. Dugong conservation. Okay, transformation of girls' education. ये भी हम PPT पे करेंगे इसकी बात है थोड़ी सी. In a country where the phrase बेटी पढ़ेगी तो क्या करेगी once echoed through homes, India has undergone a transformation. Now is बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. उल्टा बोल देगा मैंने. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो है. हाँ सही है. एक जगह मैंने पढ़ा था बेटी बचाओ बेटी पटाओ, which was funny and problematic as well. But the Beti Bachao Beti Padhao initiative has shown a lot of results in the last decade, which is nice. इसकी हम करेंगे थोड़ी सी डिटेल में बात. More women join the labor force, but are they really employed? ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, दोबारा नहीं करेंगे. Why are Indian broadcasters owed payments? इसकी जिस पढ़ लेते हैं, important तो नहीं है हमारे लिए.
Indian entertainment channels, particularly Hindi and Bengali, are widely popular in Nepal and Bangladesh. Both countries' distributors owe 350 crores to Indian firms. Nepal owes 100 crore, while the rest of amount is due from Bangladesh. Broadcast executives worry, however, that if they cut off their clean feeds, Nepalese and Bangladeshi TV distributors will simply buy an Indian satellite TV receiver and pirate the feed from there. Okay. Why is environmental surveillance important? Why not? I mean, it's quite obvious. Protect the environment. Samples taken from sewage treatment plants, effluents from hospital, effluent matlab jo waste material hai, and from public spaces such as railway stations and toilets and airplanes can be studied to see how the pathogens they contain change from day to day. Wastewater-based epidemiology. What is epidemiology? Study of microorganisms has been and study of diseases rather. Study of public widespread diseases has been used for over 40 years to track several diseases such as measles, cholera, and polio. ICMR has recently said it will initiate wastewater surveillance for 10 viruses across 50 cities. All right. Vishweswarya, Muthu Lakshmi, and Mahalanobis shaped modern India. अच्छा आर्टिकल है, ये आप लोग पढ़ सकते हो. अभी हम नहीं पढ़ेंगे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम, बट जनरल नॉलेज के लिए दिस इज अ गुड आर्टिकल. मिस्टर एम विश्वेश्वरैया इज द पर्सन जिनके नाम पे हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? चलो बताओ जल्दी से. विच डे सेलिब्रेटेड इन हिज ऑनर इन इंडिया? आगे चल के वांगचुक सजेस्टेड ओवरथ्रो ऑफ गवर्नमेंट, ऐसे इन पे एक्यूजेशंस लग रहे हैं सरकार की तरफ से. Kargil group sets terms to resume talks with center. Kargil Democratic Alliance seeks judicial probe into civilian killings. Says people who stand up for rights of Ladakh can be labeled anti-nationals. Lay apex body too had ruled out dialogue. All right, activists are demanding release of Sonam Wangchuk. उन पे NSA लगा हुआ है September 26 से. Trump's plan is comprehensive, provides viable pathway to peace, says the Prime Minister. Congress targets BJP over killing of Kargil veteran and police firing during Leh stir. कल हम डिस्कस कर चुके हैं already. India got 8% more monsoon rainfall this year, says IMD, which is nice. Center directs NGOs to seek FCRA renewal 4 months before expiry. What is FCRA renewal? तो जिन NGOs के पास foreign funding आती है उनको ये FCRA के अंडर अप्रूवल लेना पड़ता है. This is an act which is the Foreign Contribution Regulation Act, and इसमें आपको रजिस्टर कराना पड़ता है. एंड अब इन्होंने बना दिया है कि आपका लाइसेंस एक्सपायर होने से 4 महीने पहले आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा. हर 5 साल में आपको ये लाइसेंस रिन्यू करवाना पड़ता है फॉरेन फंडिंग अगर आप ले रहे हो तो. And they're saying delayed submissions do not allow sufficient time for scrutiny and obtaining inputs from security agencies. ठीक है. BJP tries to take a leaf out of MP playbook to consolidate votes. Pawan Singh, whose rebellion and independent candidacy lost NDA a seat, is now back into party. ठीक है, तैयारी चल रही है बिहार इलेक्शंस की. चिराग पासवान hits out at Tejasvi over power bank remarks says RJD is dividing Bihar. ठीक है. UK police investigating Gandhi statue defacement. तो कुछ लोगों ने ये महात्मा गांधी का स्टैच्यू है in Tavistock Square Gardens, Camden, which is in UK, in London, उसको जो है थोड़ा सा खराब कर दिया, अटैक कर दिया, उसको थोड़ा सा ग्राफिटी बना दी, उस पर थोड़ी सी डिस्टर्बिंग सी. तो उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है. कैनेडियन फॉरेन मिनिस्टर मीट्स जयशंकर इन न्यूयॉर्क. दे गोइंग टू विजिट इंडिया 13th-14th अक्टूबर को. ऑलराइट, शी इज ऑल्सो अ देसी. अनीता आनंद, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ कैनेडा, Indian origin. Okay, BJP leader VK Malhotra passes away at 93. President, Prime Minister pay homage. All right, rest in peace, Mr. Vijay. ठीक है. Bihar has fewer Passport and Foreigners Act cases. Illegal migration and infiltration have been raised as key issues ahead of Bihar polls. According to NCRB data, most of these cases were registered in West Bengal, followed by Tripura. ठीक है. तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि इलीगल माइग्रेशन और इन्फिल्ट्रेशन जो है बिहार में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन एनसीआरबी का डेटा कह रहा है कि बहुत कम केसेस हैं. तो ये डिस्क्रिपेंसी की बात करता है ये आर्टिकल कि क्या क्या एलिगेशंस हैं, क्या क्या नंबर्स हैं
बेसिकली मैसेज यही है कि दिस डेटा शोज वेरी फ्यू इन्फिल्ट्रेशन रिलेटेड केसेस, लेकिन फॉरेन प्रिजनर्स का नंबर जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है बिहार में। यूएपीए के केसेस कम हो गए, लेकिन इन्वायरमेंट रिलेटेड क्राइम्स के केसेस बढ़ गए हैं, विच इज़ मोस्टली ड्रिवन बाय एंटी टोबैको वायलेशंस। ठीक है, ओवर 1.73 लाख किल्ड इन रोड एक्सीडेंट्स इन 2023, 1.6% राइज। तो बहुत ज़्यादा लोग मारे जा रहे हैं रोड एक्सीडेंट्स में। Be safe while you step out on the road. Always wear your helmets on two-wheelers and wear your seat belts while in four-wheelers, even while sitting on the back seats. Very important to stay alive. ठीक है, CISF और ITBP के नए चीफ अपॉइंट हो गए हैं। सीनियर आईपीएस ऑफिसर प्रवीण रंजन एंड प्रवीण कुमार, दोनों प्रवीण, नाइस। CISF के बने हैं प्रवीण रंजन एंड ITBP के बने हैं प्रवीण कुमार। Both of them are IPS officers. Maharashtra, Karnataka report most number of farmer suicides, which is tragic. Okay, FPIs withdraw from Indian equities for third straight month. FPIs is foreign portfolio investors, जो लोग इंडिया की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। Analysts are saying reasons range from tariff uncertainty to dull company earnings for multiple quarters and disproportionately higher valuations. ठीक है, एडीबी एशिया डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया की ग्रोथ फोरकास्ट 6.5% कर दी है, यूएस टैरिफ इम्पैक्ट की वजह से। ठीक है, ठीक है। हमास रिव्यूज इजराइल बैड गाजा ट्रूस प्लान एज ट्रम्प गिव्स अ डेडलाइन। 3 से 4 दिन की डेडलाइन दे दी उन्होंने। Trump's plan seeks to put Gaza under external rule without Hamas, Israel to stay. Taliban's internet cut sparks Afghanistan telecom blackout. Blast near paramilitary office in Pakistan. ओके, विमेन टीम हमारी जीत गई है अगेंस्ट श्रीलंका। दीप्ति मनजोत एंड स्नेह सिजल एज विमेन इन ब्लू मेक अ विनिंग स्टार्ट। ठीक है, all right, that's about the newspaper for the day, folks. Let's come back to our PPT. एक बार जल्दी से देख लेते हैं चैट बॉक्स में क्या चल रहा है। हाँ, पक्का रीवा, रशिया यूक्रेन मैंने प्रिपेयर कर लिया है PPT, मुझे बस उसको सुबह रिकॉर्ड करना है। आई रिकॉर्डेड इन द मॉर्निंग एंड आपको मिल जाएगा वो परसों तक। कार्तिकेय सिंह, सुबह न्यूज आ रही थी अबाउट यूएसए गवर्नमेंट शटडाउन, कैन यू ब्रीफ? आई हैव नॉट रियली रेड अप ऑन दैट एज सच। देखते हैं कल के न्यूज़पेपर में अगर कुछ आता है तो। रिवाइज सिंह, आज का न्यूज़पेपर सुनने का मन भी नहीं कर रहा। आई नो थोड़ा बोरिंग है आज का न्यूज़पेपर, बट क्या कर सकते हैं, इट इज़ व्हाट इट इज़। जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गर्ल्स एजुकेशन, सो रेफरेंस दिया इन्होंने गायकवाड़ डायनेस्टी का, व्हेन फादर्स वर पेनलाइज्ड फॉर नॉट एजुकेटिंग देयर डॉटर्स and then they say that laws alone won't suffice in girl education. Fundamental shift in public perception has to be there, which should be supported by infrastructure and incentive. Beti Bachao Beti Padhao was launched in 2015. Aim was to prevent female feticide and promote girl education. So Beti Bachao, which is feticide se bachao, and Beti Padhao initiative focused on 100 gender critical districts in initial phase and later expanded nationwide. India's sex ratio at birth has improved from 919 to 929. Encouragingly, 20 out of 30 states are performing better than the national average of 930. India's total fertility rate has dropped to 2.0, just below replacement level, which is 2.1. Infant mortality rate for girls has dropped from 49 per live 1,000 births to 33 by 2020, which is a good thing. While overall female labor force participation is still a challenge, it is rising in sectors like healthcare, education, STEM, and entrepreneurship, fields that thrive on literacy and skills. Educated girls grow into educated mothers, and that changes everything. Now we talk about UPSC, 100-year journey as a guardian of meritocracy. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1990 में, उसने बॉडी बनाई। अक्टूबर 1926 में पब्लिक सर्विस कमीशन सेटअप हुआ। ये पब नहीं है, ये पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो आगे का छुप गया है। Following the recommendation of Lee Commission, and they said that wherever democratic institutions exist, experience has shown that to secure and efficient civil service, it is essential to protect it as far as possible from political and personal influences, give it position of stability, security, for ensuring successful working as an impartial and efficient instrument of the government. Headed by Sir Ross Barker, it began with limited powers as an experiment under colonial rule. फिर Government of India Act आया 1935 का,
which elevated it to a federal public service commission, giving Indians a greater role in administration. UPSC Pratibha initiative is facilitating employment opportunities for those who reach the interview stage but are unable to make it to the final list of the UPSC. UPSC is an independent constitutional body under Part 14 of the Indian Constitution, Article 315 से 323 तक इसका reference है, and it conducts UPSC वाले examinations All India Services के लिए और Group A and Group B, established 1 October 1926 as Public Service Commission, later Federal Public Service Commission, renamed UPSC after independence in 1947. अभी इनके chairman और members appoint होते हैं by the president. 3117 article जो है कहता है that chairman will only be removed on grounds of misbehavior. Chairman remove हो सकता है if he's adjudged insolvent rather, and if he engages in any other paid employment outside office, या फिर in the opinion of president is unfit by mind or body, या फिर proved misbehavior या incapacity. ठीक है. फिर Article 323 कहता है that the commission UPSC would present an annual report to the president explaining cases where advice of the commission was not accepted. Advice of the body is not binding on the government. However, an individual ministry or department has no power to reject the advice of UPSC. Court held that irregularity in consultation with the UPSC or acting without consultation on the matters enumerated in UPSC does not invalidate the decision of the government. However, it has to be laid before each house of the parliament 14 days earlier. Parliament can amend or repeal them. Act made by the parliament is needed to extend the jurisdiction of UPSC. ठीक है, लेबर ऑफ केयर की बात कर लेते हैं. For decades, women who serve as ASPs, Anshkalin Stree Parichars in Maharashtra, have been performing hardest yet least acknowledged labor in the rural healthcare sector. For a wide breadth of responsibility, their monthly wage has stagnated at 3,000 since 2016, decades behind inflation, and they don't have job security, pension, safety gear, travel allowance. 2023 में लेबर कोर्ट नागपुर ने एक्नॉलेज किया that they deserve at least the protection of minimum wages act, but they left the decision to the state. This indifference is not accidental. ASPs who predate ASHA workers and Anganwadis have been easy to ignore because they are poor rural women. ASHAs created under National Rural Health Mission in 2005 are communities first linked to health system and are officially classified as volunteers rather than employees. And their compensation are often delayed and they amount to less than subsistence. जितना गुजारे के लिए चाहिए उससे भी कम. While India relies heavily on women, community health workers and attendants to deliver maternal and child health care, immunization and disease surveillance, especially in rural areas, it refuses to recognize them as workers entitled to minimum benefits and dignity. A health system that does not value people, who keep it functional and link its margins to formal care, is bound to sabotage itself. To secure rural health is to secure the rights of women through living wages, safe working conditions, and stable employment. And that brings us to the end of the analysis. Let's look at the 3 vocab words before we move to the Mentee quiz of the day. The first word is peremptory. Peremptory मतलब होता है mandatory, compulsory, forcing compliance or participation as if it's by law. A peremptory summons to appear before the committee. Compulsory, mandatory, incumbent are synonyms. Incumbent is not an accurate synonym rather. Voluntary, optional, elective are antonyms. लैटिट्यूड. लैटिट्यूड ये ज्योग्राफी वाला लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड तो है ही, बट इसका एक और मीनिंग भी होता है, विच इज फ्रीडम, राइट टू एक्ट और मूव फ्रीली. फ्रीडम, ऑथराइजेशन, अथॉरिटी. Unauthorized, limitation, restriction, these are antonyms. Employees should have some latitude in organizing their work. The last word is contiguous. Contiguous मतलब आपस में लगे हुए, having a border in common. Neighboring, adjoining, closest. Antonyms are separate, single, apart. Connecticut and Massachusetts are contiguous states. So this is contiguous, having a border. Latitude is freedom. Peremptory is compulsory by law. And that brings us to the end of our Hindu analysis, but not the end of this session because we have our Mentee quiz today. And Ask a Mentee quiz is on the topic of law. So everything related to law, चाहे वो legal judgments हों important, चाहे वो important dates हों, चाहे वो important people हों related to the field of law, चाहे वो important bodies हों related to the field of law, चाहे वो important articles हों related to the field of law, all of these form the syllabus of today's quiz. It's a 16-17 odd question quiz. It's a fun quiz. It's not an easy quiz. If you find this easy, then that means you have read a lot about these things and your preparation regarding legal GK is solid. But ठीक है, चलो, without any more delay, I'll give you guys the code of the quiz. Today's quiz code is 76171852. 76171852.
ठीक है. For people who are new to the process, you simply need to go to a website called www.mentee.com and you have to put in this number code 76171852. And you will be able to access the quiz. Am I not audible, guys? I think my network is fine. ओके, ठीक है. तो एक बार मैं जल्दी से चेक कर लेता हूँ सारे आंसर्स सही मार्क्ड हैं कि नहीं. देन आई विल जस्ट प्रेजेंट द क्विज फॉर यू ऑल. मैं नहीं चाहता कोई गड़बड़ हो आज मेरे क्विज में. Okay, everything is on point. We are ready to begin. Let me just present the quiz to all of you. Alrighty, after a very long hiatus, after a very long break, welcome back to another Mentee quiz. This is the code. जल्दी से आ जाओ सब लोग. Let's begin. मजा आएगा आज के क्विज में. 16 questions. कम लोग हैं आज थोड़े. But I hope you all stay till the end क्योंकि अच्छे questions हैं आज. काफी बढ़िया questions curate किए हैं आज मैंने. Can we have at least 25 people in the quiz? आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ. Is everyone here? Has everyone joined? Okay, 25 तो हो गए. चलो, we'll start on a countdown of 5. Let's go. 5, 4, 3, 2, 1. 0.5, 0.25, 0.1. And let's go. Let's go to the first question of today's Mentee quiz on your screen now. All right, we start off with an easy question. 16 people got this, right? This is Indira Sahni versus Union of India, the Mandal Commission, which was formed to, check the percentage of reservation जो होना चाहिए. So this case, this Supreme Court landmark case, fixed the upper cap of reservation at 50%, and they sort of removed the reservation for promotions. काफी सारी चीजें हैं. लंबा डिस्कशन है, but yeah, this is what this is. Okay, Vanisha is on the first position and we have Manya. Okay, kya baat hai. 2 new names on the top 2. Love that. Siddhi is on third. Caramel Popchon. Okay, on fourth. Then we have Ashnu, DB Cooper, Chandralekha, Casual Sitter. Kya baat hai. Love that name. Love that reference. Toby Maguire, Spider-Man is also here. Pingu Penguin is also here. Kya baat hai. Lovely names today. Let's go to the second question. We have 28 players now. Second question of today's Mentee quiz coming up for you all in 3, 2, 1. Another easy question if you know your history. (1862) is the right answer. The High Courts Act of 1861 was passed, which led to the formation of the first High Court in 1862. Chat box में कोई मुझे बताएगा जल्दी से, which was the city where the first High Court was established? जल्दी से in the YT chat. सबसे पहला हाई कोर्ट कौन से शहर में एस्टैब्लिश किया गया? बहुत इजी क्वेश्चन है. Let's see who can answer this first. Calcutta is the right answer. Parnika gave it to me first. Absolutely correct.
All right, let's see the leaderboard. 1,000 points to everyone. Okay, we have some new names on the leaderboard. Okie Pokey, Millie, the Bald Man, Black Suit. Kya baat hai? All right, let's go to question number 3. 29 players. ठीक है. People are joining in slowly. Welcome, new people. Next question on your screen now. 9 people got this right. This was a slightly tricky question, so we are now entering the moderate question territory. So the question reads: the Supreme Court of India started functioning on, and that's where the trick is. It was established on 26 January 1950, but was inaugurated and started functioning 2 days later, which is 28th of January 1950, and that's why that's the correct answer. Okay, let's look at the leaderboard. Let's see who all got this clue right. Ashnur got this right. The fastest and is on first spot. Then we have Siddhi, Baldman, Millie, Future Lawyer, DB Cooper, Casual Sitter, Toby, Pingu, and Caramel Popcorn. All right, fourth question coming up for you all. Fourth question out of 16. Here we go in 3, 2, 1. Whoopsie. A lot of people got confused with this question. The question was the first law commission of independent India, independent India being the key phrase. The first law commission of India, of British ruled India, was chaired by Lord Macaulay. ठीक है लेकिन इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला लॉ कमीशन जो था दैट वाज चेयर्ड बाय एमसी सीटलवाड हु वाज आल्सो आवर फर्स्ट अटॉर्नी जनरल हु वाज आल्सो had multiple other posts at that time. ठीक है एमसी सीटलवाड is the right answer. फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के लॉ कमीशन के चेयरमैन था ना बढ़िया क्वेश्चन. Okay, Siddhi now comes on the top spot. Millie is on second. Ashnur is on third. Caramel Popcorn is on fourth. Then Toby, Vanisha is back on the leaderboard. DB Cooper is here. Casual Sitter. Bald Man is here. Earthman is here. क्या बात है बहुत सारे मैन हैं स्पाइडर मैन भी है हमारे पास. Alright, fifth question out of 16. Let's go. आज का क्विज ऐसे ही रहने वाला है up and down on the leaderboard because the questions are of that nature. चलो थोड़ा सा easy question आ गया फिर से आप लोगों के लिए. Easy question. 61st constitutional amendment lowered the voting age from 21 years to 18 years. Universal adult franchise. काफी relevant question looking at multiple elections happening in the country. A lot of talk about voters. Okay, some shuffles on the leaderboard. Tweeto is on the leaderboard. Rest same people. So we'll move to the next question. Question number 6. We have 25 players on this question. Let's go to question number 6 out of 16. Here we go. Fairly easy question, straightforward question. तुक्केबाजी हुई है जबरदस्त. 9 लोगों का तुक्का भिड़ गया है. Yes, there have been 106 amendments to the Constitution of India as of now. The last happened in 2023. But yeah, 100 के बाद 6 और amendments हो चुके हैं. So अब जो अगला amendment होगा वो 107वां होगा. 106 amendments till date. Millie is now on the first spot, Ashnur on second, Toby on third with the fastest response. Siddhi Tweeto, Pingu Manya is now on leaderboard. Vanisha is here, Casual Sitter is here, Earthman is here. All right, let's go to question number 7 out of 16. 26 players still with me. Question number 7, here we go. LG stands for Lieutenant Governor.
12 people got this right. It was Mr. R.K. Mathur who was the first lieutenant governor when the Union Territory of Ladakh was made. And the second one was Brigadier B.D. Mishra. And the third one and the current one is Mr. Kavinder Gupta. So Ladakh क्योंकि इतना ज़्यादा न्यूज़ में, तो I thought it would be a good relevant question to ask. R.K. Mathur is the right answer. Ashnur had the fastest response. Some shuffles on the leaderboard, but pretty much the same people. Millie on the first spot again. Let's go to the eighth question. We are halfway into our quiz. Eighth question out of 16. Let's go. So all of us have heard of father of PIL, but who's the mother of PIL in India? तुक्केबाजी जबरदस्त तुक्केबाजी. It's Mrs. Kapila Hingorani, who is claimed as the mother of PIL in India because she filed a PIL for the cause of a lot of Bihar-based workers. And एक बहुत लैंडमार्क केस हुआ था उस टाइम पे, हुसैन आरा खातून करके. पढ़ना आप लोग, अच्छा इंटरेस्टिंग स्टोरी है. We won't dive deeper abhi, but yes, Mrs. Kapila Hingorani, the mother of PIL in India. Mr. P.N. Bhagwati, the father of PIL in India. Mane had the fastest response. Casual sitter jumping a few spots. Future lawyer is now on the leaderboard. All right, let's go to the next question. Question number 9. Few people have dropped after that tough question. 23 players with us. Let's go. Question number 9 on your screen now. Oh, only 6 people got this right. See, I asked you who was the first female judge of India. Fatima Bibi was the first female Supreme Court judge of India. Leela Seth was the first Chief Justice of a High Court, first female Chief Justice of a High Court in India. Cornelia Saurabji was the first woman, I think, to practice in the Supreme Court as a woman. Not sure about that fact around Cornelia Saurabji. I will have to check. But Fatima Bibi, I'm sure. Leela Seth, I'm sure. And Anna Chandi, or Chandi, however you pronounce, was the first female judge of India and then later on became a High Court judge as well. So, yes, that's the right answer. The 3 people on the leaderboard got this one right. Millie had the fastest response. Future lawyer jumping a few spots. All right, let's go to question number 10. We have 25 players back with us. 10th question coming up for you all in 3, 2, 1. Let's go. Easy question, this one. This is regarding sexual harassment at workplace. POSH and Vishaka guidelines are guidelines which talk about that. Vishaka versus State of Rajasthan, बहुत landmark case है. इसमें guidelines were laid out. POSH is the right answer. 4 people on the leaderboard got this right. Manya had the fastest response. Few shuffles on the leaderboard. Millie still on first. Casual sitter now on second. Ashnur on third. Siddhi on fourth. Toby on fifth. Then Manya, Pingu, Future Lawyer, Tweeto, and Earthman. On the rest of the positions, we have 11th question with us. 25 players playing. 11th question coming on your screen, guys, in 3, 2, 1. It's B.R. Ambedkar who did a lot of codification of the Hindu law and developed the Hindu code post independence. So, yes, he's credited with codifying Hindu law in India. Dr. B.R. Ambedkar, Baba Sahib Ambedkar. Millie had the fastest response again. Terrific performance today.
All right, some shuffles on the leaderboard, but pretty much the same people. Question number 12 out of 16. Let's go. Let's go to question number 12. Oh, interesting question. A lot of you knew this one, and I expected as well. It's Dr. Madhav Menon, Dr. N.R. Madhav Menon, who's regarded as the father of modern legal education in India, and also known for establishment of which institute? NLS Bangalore, founding father N.R. Madhav Menon. ठीक है. Toby Maguire had the fastest response. Just a couple of shuffles on the leaderboard. Let's go to the 13th question of our quiz. Question number 13 coming up for you all in 3, 2, 1. Let's go. This is Mr. James Fitzjames Stephen who drafted the Indian Evidence Act, which has now transformed into BSA, Bharatiya Sakshya Adhiniyam. This was not Lord Macaulay who drafted the IPC. Evidence Act was drafted by James Stephen. काफी कम लोगों को पता होता है क्वेश्चन थोड़ा लेस आस्क्ड क्वेश्चन है मोस्टली लोग आईपीसी ही पूछते हैं बट यस आई थॉट कि कुछ चलो अलग पूछा जाए आप लोगों से सो यस मिस्टर स्टीफन ड्राफ्टेड आवर एविडेंस एक्ट Magical Rhino makes entry on the leaderboard with that question. Ashnur had the fastest response. Millie on first, Casual Sitter and Ashnur very close for second and third. Then we have Future Lawyer Siddhi, Manya, Toby, Pingu, Vanisha, and Magical Rhino. All right, let's go to the third last question of this quiz. Question number 14 out of 16 coming up in 3, 2, 1. Wow. This is Article 15, guys, right against discrimination on grounds like caste, gender, race, place of birth, nationality. So that is not available to foreigners. That's only available to citizens. Baki right to equality is available to them. Right to life and liberty is available to them. Right against untouchability is available to them. But right against discrimination is not because कुछ कुछ जगह हैं जहाँ पे citizens को ही कुछ कुछ अधिकार हैं and उस वजह से you cannot sort of not discriminate. Manisha had the fastest response to this one. All right, let's go to the second last question of today's quiz. 4 5 people have dropped already, but koi nahi. Second last question coming up. Here we go. Most of you got this right. Three people got deceived by my trap. It is definitely a constitutional right, a legal right. It's not a fundamental right anymore. Earlier, it used to be a fundamental right, but then it was removed as a fundamental right through the 44th Amendment. And now this is a legal right or a constitutional right under Article 300A. ठीक है. Ashnur had the fastest response. So casual sitter is now pretty close to Millie. Ashnur is on third. Manya, future lawyer, Vanisha, Siddhi, Magical Rhino, Toby Maguire, and Pingu are on the leaderboard. Let's go to the last question of our quiz. Question number 16. Here we go in 3, 2, 1.
तुक्केबाजी, बट ठीक है। आर्टिकल 37 स्टेट्स दैट डीपीएसपीज आर नॉन जस्टिसिएबल, जिसका मतलब है आप कोर्ट जाके एनफोर्स नहीं करवा सकते डीपीएसपी कि भाई ये मेरा राइट है, ये मुझे चाहिए। एंड दैट इज enshrined अंडर आर्टिकल 37 of the Indian Constitution, which says that they are not justiciable in courts. And that brings us to the final leaderboard of today's law quiz. Let's see who takes the cake today. I think it's gonna be Millie. Fantastic performance throughout the quiz, Millie. Whoever you are, please reveal your true name, your real name, to us so that we can congratulate you. Very well played. Very well played. Casual sitter, Ashnoor, future lawyer Manya, Vanisha, Siddhi, Magical Rhino, Toby, Pingu, and everyone else who participated in this quiz. I know some of you cracked some really good questions but are not on the leaderboard. So give yourself a pat on the back for knowing those tough, obscure questions. But yeah, this was always fun hosting you all. I hope you all enjoyed this quiz, learned at least a couple of new things. That was my intention. कि कुछ नया हो आप लोगों के लिए इस बार in this quiz. How did you guys find the quiz? कैसा था आज का quiz? मजा आया? Shreyas was casual sitter. मेंटी ग्लिच कर रहा है कुछ लोगों का, क्या कर सकते हैं यार उसमें। वर्क परफेक्टली फाइन फॉर मी टुडे, आज कोई भी ग्लिच नहीं आया। चलो कोई बात नहीं। Mentee was glitching for a lot of you. Sorry about that. Shreyas was casual sitter. Well played, Shreyas. Saransh was bald man. Well done. Like the quiz? चलो अच्छी बात है. Hari was Pingu Penguin. अरे CLAT aspirant ने commendable बोल दिया. Thank you so much. Okay. Priyanshi was magical rhino. Joined as black coat. पहले but net नहीं चल रहा था. All right, ठीक है. It was fun hosting this quiz for you all. Still haven't figured out who was Millie, the silent winner. But ठीक है. Kudos to you, whoever you are. Well played. चलो, that's all for today's quiz, guys. Next quiz हम करेंगे probably a current affairs quiz for the month of September, because we have completed September. So next would be a revision of current affairs of September. Come prepared for that. That's gonna be the topic. एंड जस्ट टू रिमाइंड यू गाइस, कल क्लास नहीं होगी हमारी। कल टुमारो इज अ हॉलीडे, कल ऑफ है, कल अवकाश है, कल छुट्टी है। तो कल आप लोग भी एक दिन जो है यूटिलाइज करो या चिल करो, आपकी मर्जी है। बट यस, मेक गुड यूज ऑफ योर टाइम एंड वंस अगेन हैप्पी नवरात्रि एंड हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू. Celebrate it with your friends, families, and have fun. I'll see you all on 3rd of October now with another Hindu analysis. Till then, take care. Bye bye. Signing off.